Imagine a train platform in Mumbai. Dozens of trains passing by, thousands of people waiting, but only one train takes you to Bandra. और उसमें सिर्फ वही लोग चढ़ेंगे जिसका डेस्टिनेशन बैंड्रा है. YouTube भी एग्जैक्टली ऐसा ही है. If your channel is a train, your niche is the destination. और अगर आपका डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं है, तो व्यूअर्स आपके चैनल पे चढ़ेंगे ही नहीं. They will watch one video and then bye bye. आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू रिवील आपकी रियल नीश कैसे आइडेंटिफाई होती है, नीश और टॉपिक के बीच का रियल डिफरेंस, a hidden trick that I recently found out on YouTube, and one mindset change that will double your clarity. So let's start. Why most new YouTubers fail? जैसा कि आपको मैंने सीरीज के पहले एपिसोड में बताया था, मेरा चैनल 2011 से है एंड आई गॉट अराउंड 550 प्लस सब्सक्राइबर्स. उसमें से आधे फैमिली और फ्रेंड्स हैं. बाकी के सब कहाँ गए? The answer is very simple. They left because I did not have any clear niche. मैं बहुत ही रैंडम वीडियोस अपलोड किया करता था. कभी ट्रैवल, कभी फोटोग्राफी, कभी लाइव कॉन्सर्ट. The channel was like all in one थाली. The viewers were confused. They were asking me, बॉस तुम हो कौन? ऐसा क्या है जो तुम मुझे डिफरेंट दिखा रहे हो? What are you helping me with? If you do not have clear niche, there will be no growth. Confused creator equal to confused audience. Let me make you think. एक व्यूअर आपके चैनल को क्यों फॉलो करेगा? उनके पास YouTube पे हजारों क्रिएटर्स है. Then why you? Let me tell you something very shocking. They do not subscribe because they like you. They subscribe because they need something from you. Your niche is what people need from you. Imagine you are standing at Dadar station and you want to go to Bandra. The first train arrives, CST fast. You skip it. Second train, Viral local. You skip it. Third train, Churchgate fast. You skip it. Fourth train, Bandra local. And you run towards it. This, my friend, is niche. Bandra जाना है, वो एक need है. Train, that's you, the creator. Route is the content. And passengers are the viewers. The moment your niche matches their need, they will jump in. But if the train goes to random places, viewer बोलेगा, ये train मुझे कहीं भी ले जाएगी. I'm going to skip this one. Difference between topic and niche. देखो, topic एक डेट जैसा है और niche एक शादी जैसा. डेट पर कोई भी जा सकता है, पर शादी तभी होती है जब मैच मिल जाए. व्यूअर्स टॉपिक के लिए आते हैं, पर niche के लिए रुकते हैं और फिर सब्सक्राइब बटन दबाते हैं. इसीलिए अगर आपका niche क्लियर नहीं है, तो व्यूअर्स बोलेंगे we are better off as friends. टॉपिक attracts views, niche attracts loyal audience. और यही ऑडियंस आपके चैनल को एक्सप्लोर करवाती है. तो कमेंट में बताइए, अगर आपका चैनल एक शादी का प्रपोजल होता, तो आप अपने व्यूअर्स को क्या प्रॉमिस करते? दैट इज योर नीश. द सीक्रेट नीश फॉर्मूला. आई शेयर अ ट्रिक विथ यू जिसके बारे में कोई यूट्यूबर ओपनली नहीं बताता. द 3 लेयर नीश स्टेप. लेयर 1. व्हाट डू यू लव टॉकिंग मोस्ट अबाउट? लेयर 2. What do people come to you to take your advice on? Layer 3. ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप 50 प्लस वीडियोस बना सकते हो without getting bored? If all circles overlap, boom, that's your niche. Let me give an example of me. I love helping people. People come to me to get YouTube ideas, growth, how to write scripts, and I can make 100 plus videos on this. So my niche is helping new YouTubers to grow. अभी के अभी कमेंट सेक्शन में अपने 3 लेयर टेस्ट लिखो. मैं पर्सनली चेक करूंगा और रिप्लाई करूंगा. और अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको हेल्प करूंगा. This was the foundation. Now in video 3, I am going to show you how to validate your niche in 10 minutes without having to record a single video. Trust me, this is something I wish someone told me earlier.